to Jharkhand Chief Minister Hemant Soren's party JMM that is arming a political fight back with the execution of two of its main promises made during the 2019 state elections. In a special session, the Jharkhand Assembly cleared two landmark bills, one to use land records from 1932 to determine those who are local inhabitants and another to increase the reservation in jobs and education for other backward classes or OBCs from 14 to 27%. Now, the Jharkhand government gave its nod for OBC reservation to 27% from the present 14%. This takes the total quota in Jharkhand to 77%, making it the state with the highest percentage of reserved seats now. अब आगे क्या? अब आगे दिल्ली क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? मुहर लगवाएंगे कैसे? जैसे बिल पारित किया वैसे। नहीं, ये कहा जा रहा है कि आपका सड़ना कोर्ट अरे दिल्ली में हमारे सांसद भी हैं, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की भी सांसद वहां है। ऐसा थोड़ी है वहां हम लोग खाली हाथ बैठे हैं। बीजेपी आपके एजेंडे पे क्यों चलेगी? आपको हीरो क्यों बनाएगी? मत बनाए, विलन बनाने का प्रयास जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन राज्य की जनता तय करेगी। आखिर जनता का भी एक अदालत है, उस अदालत से कौन बचेगा? हम जनता के अदालत और जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं। हम लोग एजेंसियों के भरोसे राजनीति नहीं करते। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता हमें अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए सदन भेजती है। तो आज आप विगत 2019 के बाद आप देखें, कोरोना का जंग, सुखाड़ का जंग, यहाँ के कर्मचारियों का अधिकार, ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए क्या उत्साह का माहौल है। ढोल नगाड़े के साथ लोग शिविरों में जा करके अपना अधिकार ले रहे हैं। 20 वर्षों में कभी पदाधिकारियों को आपने गांव में कंप्यूटर, लैपटॉप, जेरोक्स मशीन ले जा करके काम करते देखा? आज आप देखिए ऐसे जगहों पर जहां पैदल नहीं जा सकता, ट्रैक्टर से लोग जा रहे हैं, बैलगाड़ियों से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं पदाधिकारी। तो और झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य, जहां केंद्र सरकार को तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस राज्य का सर्वांगीण विकास कैसे हो। प्रधानमंत्री जी तो देते हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए अभी बकाया है और दुर्भाग्य है इन्हीं के राज्य इकाई के लोग जो गंदगी फैला के इन लोगों ने विगत डबल इंजन के समय में चलाया है, उन गंदगी का टिकरा अब हमारे सर पे फोड़ने का प्रयास। बिजली का बकाया 5 साल में इन लोगों ने रखा। भारत सरकार बिजली का पैसा काट रही है आज हमारे सरकार में, उसमें क्यों नहीं काटे? फिर भी इतने विकट परिस्थिति में भी हम लोग एक एक कदम मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। राज्य की जनता देख रही है, मुद्दा विहीन विपक्ष, नेता विहीन विपक्ष के साथ इस राज्य के लोगों का कोई भरोसा नहीं। मेरा एक अंतिम सवाल है, आज जो 2 बिल आपने पारित कराए हैं, उसका आने वाले दिनों में अब रोड मैप क्या होगा? देखिए, ये सारे मुद्दे हमारे नहीं हैं, ये सारे मुद्दे इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों का है। इसका रोड मैप आने वाला समय में राज्य की जनता तय करेगी। Let me now go across to our guests who are joining us on the show. Dr. Tanuj Khatri, spokesperson of the JMM, Mayur Jha, spokesperson of the Congress, will join us shortly, and Alok Vats, leader of the BJP. Alok Vats, coming first to you because we just heard Hemant Soren speak there. Isn't this 77%, the quota limit now in Jharkhand, pretty much equivalent to the OBC and the ST population in the state, which almost comes to about 72%. This means almost the entire chunk of the population is under some sort of quota. And this virtually makes a mockery of the reservation system. And why I'm asking you that question, sir, is because
the BJP has pushed for a 10% EWS quota as well, allowing for that 50% limit to be exceeded. So do you think that you all have set the trend? Now other states are following suit. Let me tell you one thing, Maha, that the quota reservation, the way it is being increased, someday, I think very soon it will cross the 100% mark and it will become redundant thereafter. Everybody who wants to, he has done so earlier in the case of the pensions of the people. He is not looking into he is not calculating what income he is generating and what he is going to give. He knows that sooner or later he will have to go. So he wants to create the full mess. But just a few days ago, the Supreme Court has cleared the 10% EWS quota, which the BJP was batting for, and that virtually now the court has said that the threshold or the limit of 50% reservation can be breached. So isn't your party also a trendsetter there? See, let me clarify this, that the criterion for giving quota to anybody, whomsoever it may be, must be his economic condition. Lot of people who are getting sir, many people believe that is not in sync with the constitution, even though the court has recently said that that can be a basis for giving quota and reservation, and that's how 10% EWS quota was cleared. However, many people disagree with that. Many people disagree with that. That will be the basis. Beg your pardon? Many people disagree with that thought. They say that it's not in sync with the constitution. Maha, sooner or later they will have to agree with this. You see, with times changes and the conditions prevailing during those times, you have to make changes in a lot of things. And there has been changes, even in the performing the puja, doing other things. Things have changed what it was earlier, either with Hindu or with Muslim or with Christian or with Sadat. Things have changed according to the present times. So what you are saying is that social divisions, caste divisions are not as grave now as economic divisions. Is that what you are trying to say? Yes. Okay, I'll come back to you. Tanuj Khatri, I want to come across to you now. How do you justify 77% reservation, leaving only about 23% for the rest? I understand that the population of OBCs and STs is extremely high, calculated together in the state of Jharkhand. But as I'm pointing out, this is virtually reducing the entire thought behind quota or reservation to a mockery, because this is virtually like giving everybody quota. Nobody will be left. That's for Tanuj Khatri. Go ahead. जी देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि लगातार देश के अंदर में और विभिन्न राज्यों के जो पिछड़े के जो आयोग है, कई राज्यों में उसने ये रिपोर्ट दी है कि आज भी जो उनको आरक्षण मिल रहा है वो उनके आबादी के हिसाब से, उनके अनुपात के हिसाब से कम है। और उसी ओर झारखंड सरकार ने भी कदम उठाते हुए इसको विधानसभा से आज पारित करने का काम किया है। दो महत्वपूर्ण चीजें जो आज जिसके लिए झारखंड का निर्माण हुआ था, पहला जो 1932 जो खदियान आधारित जो नीति है, स्थानीयता की जो नीति है, उसको यहाँ के हमारी सरकार ने आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज विधानसभा से जो है पास करने का काम किया। और दूसरा जो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नीतियों के झारखंड के अंदर में विरोधी थी। पहला जो इन्होंने 1932 का जो कटअप जिसकी वर्षों से मांग झारखंड के अंदर में होती थी, उन्होंने 1985 करने का काम किया था जब ये सरकार में थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। और जब बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण को कम करने का काम किया था। तो हम और हमारी सरकार वही जो कुरीतियां, जो गलतियां, जो या कहें कि जो दमनकारी नीतियां जो भारतीय जनता पार्टी ने लाने का काम किया, हम उसको ठीक करने का और उसको सही मायने में जो है झारखंड की जनता को देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, Tanuj Khatri, let me go across to Mayur Jha is joining us on the phone line now. Mayur Jha, the JMM is saying that the government is justified in this
ceiling of quota being increased to 77%, and it is in sync with the OBC and ST population in the state. Do you think this argument is good enough for increasing the quota limit? Absolutely, Ma. In fact, first of all, let me apologize for not being able to join on video because of some technical problems on my end. The biggest problem, I was hearing one of your panelists, Maha, and that panelist was saying that the bigger differences is economic. Just for the context and reference of that panelist, I would like to point out that reservation is not a poverty alleviation program, Maha. Reservation is a quest for basically balancing the various social disparities. Reservation is about participation. Reservation has nothing to do with economic disparity. It is not about, it is not a poverty alleviation program. It is purely a program to address the social discrimination that has been prevalent over decades and years and centuries. So the only basis for reservation has to be caste, and I am very firmly standing in, and that's the stand of the Congress party also. As far as the 77% quota is, concerned, Maha, only those people are objecting to that who are also objecting to any question or any concern for caste, for a caste census. What is the problem in conducting a caste census? The reservation criteria that was fixed was based on the last caste census ever held in this country. Why can't another caste census be held? Times have changed, aspirations have changed. Why can't there be a caste census? All right. Let's take that question with Alok Vats. Alok Vats, this point is repeatedly being made. Nitish Kumar has also made this point, saying have a caste census. Why isn't it being done? We are not against caste census. Whenever the time will come, it will be done. We are not opposing this move by anybody. But what the gentleman, Mr. Jha, was saying, that this is to elevate the thing. A man who is already affluent, and if he gets the quota benefits, how does he benefit in getting uplifted? He's already uplifted. And there is another guy who belongs to this is not as simple as it appears, sir. These are historical issues, historical injustices that have been done with certain communities and castes, and they take centuries to be overcome. I think that is something that you would agree with, right? Now the time has come that many of these people have been elevated, but there are others from the front section of the society who have to also be lifted and come in line with them. So, with time, things have to change. But that is not the purpose of reservation, is the point that Mayur Jha was trying to make. But Atul Khatri, Tanuj Khatri, I want to come to you now. Alok Vats Tanuj कह रहे हैं कि जिनको पहले कोटा का बेनिफिट मिल गया है और उनके हिसाब से वो सोशली एलिवेट हो चुके हैं, इकोनॉमिकली, सोशली नहीं अगर तो इकोनॉमिकली एलिवेट हो चुके हैं, तो उनको कोटे का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, और जो इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडन है एक तरह से उनको मिलना चाहिए। कुछ कर रहे हैं। लेट हिम रिस्पॉन्ड। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, यही इनके अंदर का संविधान है। इन्हीं बातों से पता चलता है कि भारत के संविधान को ये नहीं मानते हैं, ये बराबरी के अधिकार को नहीं मानते हैं। ये आज तो अच्छा हुआ कि इन्होंने आपके नेशनल चैनल पर इस चीज को स्वीकार लिया कि जिसको मिल चुका है उसको नहीं मिलना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि वो पुनः उस लाइन पर आकर के खड़े हो जाए जहां उनका शोषण हुआ, जहां उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम किया गया? और संविधान के अंदर में आर्थिक, जहां तक मुझे जानकारी है जो निकल करके आ रही है, उसमें आर्थिक का कोई जिक्र नहीं है। आपको सबको समान रूप से लाना होगा, एक पायदान पे खड़ा करना होगा, और उसी की कोशिश हम कर रहे हैं झारखंड के अंदर में। आप कब तक पिछड़ा रखिएगा? कब तक आप पिछड़ों के नाम पर राजनीति सिर्फ कीजिएगा? जब चुनाव आएंगे आपके प्रधानमंत्री मंच से दुहाई देंगे, लेकिन जब करने की बात आएगी आप उस वक्त ऐसे बयान देंगे कि जरूरत नहीं है। इन्हें माफी मांगनी चाहिए आज के चलन पर अगर इस तरीके की बातें समझ में आएंगी। आज पूरे देश की आबादी जिस तरीके से ग्रसित है उसको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, एम्पावरमेंट की जरूरत है, और आप इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं भाई साहब, ये समझ से परे है। क्या आपके प्रधानमंत्री इससे इस्तेमाल करेंगे? आप बताने का काम कीजिए। अगर रखते हैं तो यही सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि ये आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, इनके खिलाफ है ये,
और अगर कोई एक व्यक्ति ठीक है, let's get a reaction from Mayur Jha as well. तो ये उसका ठीक है। अधिकार करते हैं। Tanuj Khatri, let's get a reaction from Mayur Jha as well. Then we'll go back to Alok Vats because he was raising his hand. Mayur Jha, we just heard Hemant Soren saying there that the BJP was trying to make a villain out of him, and now the people will respond. Do you think that this can actually be a game changer in the state? No, it is a game changer, Maha. I come from a state which has 55% OBC population, and thanks to successive governments of BJP, unlike other states where there is a 27% OBC reservation, my state where we have 15% OBC reservation. 27% is the benchmark, the 27.5% is the benchmark reservation that has been given to OBCs all over the country. Why should Jharkhand, a state which has 55% OBC population, only have 15% reservation for OBCs? So that has been a long-standing demand. Okay, we seem to have lost our link there with Mayur Jha. Alok Vats, will this be a game changer in Jharkhand for working in favor of the sitting Chief Minister Hemant Soren? He's alleging that the BJP tried to make him a villain and he's fighting back. Let me tell you one thing, that we never made him a villain. It was his own doings which went to the court, and there was a deliberation on his activities, but we have nothing to do with it. But yes, as you said that regarding the game changer, this all is politically motivated. It might result in giving him some extra votes, but otherwise it has nothing to do with the reservation that is there is more than enough, and it should not go to this high level. The way it is being increased by people, tomorrow you will see some other state will say it is 83%. So where does the other people go who are poor, who cannot meet even two ends meet properly? Where without reservation, where do they go? Okay, maybe the answer to that is creation of more jobs, perhaps, and having more institutes for education as well. But we'll leave it at that, sir. We'll leave it at that, sir. We've completely run out of time. If you reserve 77%, then what is left? We'll leave it at that. कर्नाटका में इनकी सरकार ने 9वीं अनुसूची में भेजने का काम किया है आरक्षण को, उस पे भी जवाब ले लेते हैं इनसे। कर्नाटका में इन्होंने यही काम करने का किया है। देखिए, एक बार जो हो जाती है वो फिर वापस नहीं होती है। कर्नाटका में कांग्रेस के समय से भी बढ़ी हुई थी, तो आप उसको वापस नहीं कर सकते हैं, पॉलिटिकली भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, we'll leave it at that. We've completely run out of time. Many thanks to all three of our panelists for joining us here on the show.